करना चाहूँगी. Your difficult job is the dream of everyone unemployed. Your annoying child is the dream of every infertile. Your small home is the dream of every person homeless. Your little money is the dream of every person in debt. Your health is the dream of someone suffering from illness. Your smile is the dream of everyone depressed. So let's be grateful and content with every little thing Allah Ta'ala has given us. यानी बस ये छोटी सी कोट तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं. हमारी ज़िंदगी जो है चल रही होती है, लेकिन मे बी छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो छोटी चीज़ें शायद किसी और की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. नज़रअंदाज करते हैं अपनी सेहत को, अपनी खुशियों को. जो छत हमें दी है, अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है उसके लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं. तो बस इतनी सी एक गुजारिश है कि कोशिश करें, शुक्र अदा करें, जिस हाल में हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. और उसकी मेहरबानी है उस कि हम जो है खुशियों में हैं, कई लोगों से कई ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ. नादिया जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं. आर यू जी? अस्सलाम वालेकुम. I'm listening to you. You're listening to me. तो बस आज क्या बातें करने वाले हैं हम, नादिया? So today we're gonna basically, I want to talk. I've been recently seeing बहुत से clients इस तरह से आके last minute में परेशान हो रहे हैं makeup के बारे में, about like bridal makeup, party makeup. They're coming to me. They're sending me pictures that their makeup. They hired someone who was maybe not experienced or who is kind of learns off of YouTube and things like that. तो ये अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं या फिर जो मेकअप उन्हें चाहिए उसकी भेज रहे हैं? No, so initially जो उनको चाहिए था, and then what they ended up getting. Oh. So I wanted to talk about this because I think it's really important, especially जो brides होती हैं. You don't want your makeup, obviously, उस दिन आप नहीं चाहते कि आपका makeup खराब हो जाए. बहुत से लोग they hire people based on, yeah, and this is everywhere. I'm talking here, I'm talking, and all over the country, all over the world. Okay, if this person has a really good name, that's great, that's awesome. And I'm sure the work might be good, but what is the experience of the person? Can they work with photography makeup? Because obviously, जब bridal होता है तो photography का बहुत, you have to think in a photography stance. How is it going to come out in pictures? So make sure, I just want to say that when it comes to your bridal makeup or it comes to party makeup, don't cheap out. Make sure that your makeup artist has experience, because the thing is, when someone's experienced, and that's any field, it could be, make sure they have the background for it. This is what they've learned. For makeup artists, we put a lot of time, years of experience. We put time customizing the look for you. We go out and we do like trials and stuff like that, and it's according to your face. A lot of people आजकल with social media, वो YouTube देख के वो समझो कि वो मेकअप सीख गए. ठीक है, मगर आपके ऊपर वो बहुत अच्छा लगता है. You do it on yourself, but it cannot apply to everybody. But वो हर कोई भी नहीं कर सकता, because whenever I see YouTube and I want to do something on myself, मैं completely I really mess it up. So, but that is a valid point जो नादिया कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेकअप आर्टिस्ट हर एक लोग जानता हो. They know to work with certain cameras, they know to work with certain lights, and अगर आप चाहते हो कि किसी एक particular look और किसी एक particular field में काम करना है, maybe bridal के लिए somebody is an expert in just that field, maybe photo shoots के लिए कोई और expertise करते हो. So it's very important जब आप zero down करें तो ये पता करें कि आपका जो makeup artist है वो किस चीज़ में experts हैं. Exactly, and that's what artistry. People think, oh, ये उठा लिया, eyeshadow उठा लिया, 2-3 उठा लिए, बस मुँह पे लगा लिया. Actually, no, artists, makeup artists, they're actually artists because they study. ये जो किसी का face होता है, it's our canvas. We look at it, we study it. उस फलान की आँखें कैसे होती हैं, फलान का complexion कैसा है, उसका undertone कैसा है, what works with the foundation, how is their skin. I ask so many questions before I actually go into the whole thing. What do you like? What don't you like? Some people don't like glitter. Some people don't like matte finish. Some people,
And then, you know, some artists who aren't experienced with this, because it is providing a customer service, it is customizing this person's look. That client is somebody that you want to, you know, you want them to come back as well. So making sure you're investigating your client, making sure their needs, their wants, their, you know, what they want their, you know, everything to look like. Especially in the bridal shoot, you know, the bridal, they're like, I'm not sure. You can't help it. You look so attractive. Even the mature is attractive. I was like, okay. But anyway, so that's what I want to say. And a lot of people, you know, will start to, like they'll say, okay, well, yeah, we're a makeup artist. And then they'll end up, you know, okay, log free ke chakkar mein, they end up hiring that person and then their makeup messes up. If you are not paying somebody to do your makeup and someone who's experienced, ठीक है, बात के लोग के दोस्त करते हैं, oh, I'll do your makeup and stuff like that. But when it comes to an occasion, like generally it's okay कि आपके दोस्त ने आपके लिए makeup कर लिया, फलाने ने makeup कर दिया, you know somebody. But if you're trying to hire somebody, don't cheap out, because a lot of people will say like first of all, this is our job, this is our career, is makeup art, like professional artists. We have a phone call for you, Nadia. Oh, okay. Ji, caller, you're on air. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm calling from Dallas. Okay. And I wanted to say that I enjoy Nadia Siddiqui's segment so much that I don't miss a Sunday. I make sure that, I'm sorry, the echo was getting to me. That's okay. Just wanted to say that I don't miss that Sunday. I make sure I get all my chores out of the way so I can sit and enjoy her show. Thank you. Thank you so much. That means so much. That's so nice of you. तो आप बताएं, how much did you learn and did you ever try those tips on yourself? Yes. So yes, I do. When she's done her makeup, when it came to finding out the right foundation and which person to go to, the questions you should ask when it comes to your bridal or party makeup, and it just has helped me very, very much. Thank you. So I'm so happy to hear that. I really appreciate that Thank you so much. Yes. Thank you. So yes, so Nadia, you are actually giving out tips and people are following it. That's such a good thing. That makes me happy. That makes me want to work even harder, you know. और आप कह रही थी कि जब आप, you know, mostly when your friends do makeup or when you want to get a free fix, I'd like to add over here कि जब भी आप ऐसे कोई काम करें, like I always say, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब अगर सामने वाला इंसान जो है कोई पैशन ना दिखाए या अपना दिल से बिल्कुल ना काम करें, it doesn't show. So even when you go for makeup, अगर आपके दोस्त आपके लिए makeup कर रही हो या फिर maybe you just went for a free trial, until and unless they are not passionate about it और उनका दिल से जब तक वो काम नहीं करेंगे तो आपके चेहरे पर भी नजर नहीं आएगा. And if they don't annoy you, if you're a makeup artist, आपको annoy नहीं करते, questions पूछ के कि आपको क्या पसंद है, आपको नहीं पसंद है. एक दफा, I know it gets a little annoying but we are trying to find out कि आपके लिए क्या work करता है, and people don't understand that. And then on top of that, this is like free, like basically when you are investigating somebody prior to their event, we're taking the time out, you know, to help you. Now, when it comes to the event, then they're like, you know, you get asked, they're like, how much is it? Or what is your bridal makeup? Or what is your party makeup? You quote them, they're like, oh, can you do, you know, can you take off like, 50% off? Well, I mean, this is, you know, just like every person has, you know, average person has a 9-to-5 job. You're not going to tell that person, well, you know, cut your hour and a half or cut your, you know, pay for 2 hours. This is, I speak for all artists, yeah, and people who freelance, not just in the makeup industry, but other photography, whatever it is. This is their career. But I think, you know? you know, this is not going to change. This is but not free. You shouldn't expect free though. Discount is okay. Discount, ticket. I do for a group of 4 and more. If someone says, well, I have 4 people for party makeup, absolutely, I'll give you a discount. $5, $10, we're not losing anything. That's fine with me too. And I know probably a lot of other people feel that way, that I can do $5, $10. Why not? That's fine. It's me just gaining a client. But if you're asking for like a whole 50% off or a whole free, then that's like, okay, wait, I can give you something, but. So when you go to finalize with somebody for makeup, what do you think is the best time? कौन से वक्त जाना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं, maybe their skin looks really pretty right in the morning जब वो उठते हैं या फिर just before going to bed.
क्योंकि it is very important कि मेकअप आर्टिस्ट आपको बिना मेकअप के देखें पहले, so that they decide what to do and how to work on you. तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट वक्त होता है to set up an appointment with a makeup artist? I prefer in the morning, but obviously अगर किसी के पास time, because obviously that's when everyone is kind of fresh and they've washed their face and they just slept, and so सबसे ज़्यादा fresh skin उस वक्त होती है. But if obviously time के वक्त people are busy, if someone needs an evening appointment, I make sure that I am applying all their skincare, making sure to kind of refresh the skin. So doing the skincare is really important part of making sure that everything looks good. If your makeup artist is just, you sit down in the chair and your makeup artist is just applying makeup directly on you, that's not a good sign. So what are the tips also? जैसे आपने कहा अलग-अलग makeup artist की अलग-अलग expert fields होती है, zones होती है. Maybe somebody is really really good with photography. कोई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है for bridal makeup. तो क्या टिप्स होगी व्यूअर्स के लिए कि जब वो ज़ीरो डाउन करना चाहें, चाहे वो ब्राइडल के लिए हो, चाहे वो इवेंट के लिए हो या फिर फोटोशूट के लिए हो, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिस तरह से वो रिव्यू करे कि ओके मे बी आई एम गोइंग टू ज़ीरो डाउन दिस मेकअप आर्टिस्ट? I would do obviously investigate your makeup artist questions कि उनका experience क्या है, उन्होंने कहाँ काम किया है, reviews, people have websites, social media, maybe referral, a lot of it's word of mouth. So, try to see if someone else has gotten it. A lot of times what happens is yeah, she, so-and-so does really good makeup, but then someone else sees it in person, they're like, well, I didn't think it was that, great. But, so I say just try to do your investigation. If your artist is charging, you feel like she's, or he or she is charging a higher amount, it's okay, they must have the experience. But if they have no experience and they're charging this high, extensive amount, then you probably don't want to go with that because you'll end up, getting stuck at the end. I'd really like to bring this up about word of mouth. Word of mouth से ऐसे होता है कि कई बार ऐसा होता है maybe I liked the makeup that somebody did for me. Right. तो उसमें आपको नहीं लगता है कि कई बार लोग फंस जाते हैं word of mouth? कई बार दोस्त जो है वो recommend करने लगते हैं like एक particular makeup artist के, oh she's gorgeous, she's the best, ऐसे वैसे. तो how does one इससे कैसे ना trick हो इंसान? It's always best to do your investigation. Or, I mean, really, if you are, just अगर कोई बोला कि नहीं वो बहुत, फलाना बहुत अच्छा bridal makeup करता है, maybe you can go and get your party makeup done from this person. Or say, can I have a quick trial with you? Just so you get an idea. Because हो सकता है कि, the person they did it on, it just turned out really well. It looks really good or whatever. But it could look different on you. So a lot of times what happens, like I was saying, some artists will they'll learn something on YouTube or wherever they learn it, and they'll do the same look on everybody. Some people like that. They like the same look. I know I've seen that a lot. By the way, at this point, I'd like to mention that Nadia जो है काफ़ी सारे YouTube tutorials, social media पर maybe on Facebook, हर जगह जो है वो बनाती रहती है and she keeps posting. So if you're looking for tutorials and tips, Nadia is absolutely one of the pros, one of the best in Houston. Or Nadia will just tell us how does one go up and look up the videos? You can go on my Facebook, Nadia Siddiqui. There's Nadia Siddiqui Makeup Artistry. Instagram, Nadia SMUA. You can always inbox me. I get a lot of questions a day, alhamdulillah, and I always answer them. I'm not like, oh, I'm not going to answer you because, whatever. No, I will. If you have a concern about your makeup, I can't give you life advice, but about makeup, I will definitely answer it. Skincare, anything. I'd be more than happy to. So makeup से related जो सारे सवाल है वो पूछना अगर agony aunt सोच रहे हो आप बन सकती है Nadia, she's not going to do that. So that was the segment with Nadia. हम चलते हैं छोटे से break की तरफ. Break के उस पार we have another guest on the show. Keep tuned in on the Sunday Brunch. कुछ maybe people that are using us, maybe that जो add नहीं कर रहे value हमारी ज़िंदगी में,
उन्हें भी डिटॉक्स करने का कोई तरीका होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स सच अ वैलिड पॉइंट। चलते हैं महमूदा जी के पास। तो ये ख्याल मुझे भी आता रहता है कि किस तरह ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगियों से डिटॉक्स करें, किस तरह इन्हें बाहर निकालें। एक्चुअली है ये कि आप दूसरों पे तो आपका नहीं है कंट्रोल, नहीं कहना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं अपने लिहाज से ये कहती हूँ कि जब आप अपने आप को सही कर लें, मीन्स फॉर एग्जांपल कोई आपको बॉदर कर रहा है तो आप लीव देम अलोन, डोंट केयर अबाउट देम। हम सुने उनकी अलोन करते हैं लेकिन वो हमें लीव अलोन नहीं करते। सुने तो उनकी क्या लेकिन सुने उनकी, मगर ऐसे ही समझें जैसे एक बच्चे से आप बात कर रहे हैं, बच्चे की कुछ समझ नहीं है, कुछ वो हर्ट कर रहा है अपने आप को भी आपको भी, तो आप लीव देम अलोन। दूसरी कि स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर मज़हब में हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे अपने इस्लाम में ऐसी चीज़ें, लेकिन आप मेडिटेशन करें, इस तरह से चीज़ें करें कि आपके जहन से जो जितने भी नेगेटिव थिंकिंग हैं, नेगेटिव चीज़ें जमा हो गई हैं, वो डिटॉक्स हो जाएं, ताकि बॉडी, जब तक आपका ब्रेन हेल्थी नहीं होगा आपकी बॉडी भी हेल्थी नहीं होगी। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आई मस्ट ऐड दिस कि अक्सर जो होते हैं, जो लोग हमारी ज़िंदगियों में जो ट्रबल क्रिएट कर रहे होते हैं, वो करीबी लोग होते हैं जो बहुत एक आदत सी बन जाते हैं हमारी ज़िंदगियों में, और उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने बिल्कुल बहुत ही वैलिड पॉइंट की कि दूसरों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इट्स ऑन आवर ओन पर्सनल चॉइस कि हम अपने आप को कैसे सुधारें और अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। कहावत भी है कि आप किसी और के माइंड, किसी एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज आप में देखना है, आप चाह रहे हैं, आप दूसरों में पहले आप अपने आप को चेंज करें। फॉर एग्जांपल अगर बी द चेंज यू वांट टू से, तो वो एक बेसिक चीज़ है कि आप अपने आप को चेंज कर लें। अगर किसी चीज़ से आप हर्ट होते हैं, खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा करके मैं कहती हूँ उससे हट जाएं आप। ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, मुझे ड्राइविंग से थोड़ा सा बॉदर होती हूँ मैं, आई डोंट लाइक टू ड्राइव, मगर मैंने कोशिश ये की कि मैं ऐसे आधा घंटा पहले निकलूँगी घर से, आई डोंट वांट अ रश, और दूसरे के म्यूज़िक थोड़ा सा चला लिया हल्की आवाज़ में, ऐसा भी नहीं कि कोई सिग्नल कोई दे रहा है आपको हॉर्न और आप ना सुनाई दे रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आगे तो हो गई माइंड को डिटॉक्स करने की बात है। अब बॉडी की डिटॉक्स, समर करीब में आ रहा है, एंड ऑब्वियसली वी आई थिंक समर इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू शेप, क्योंकि आवर्स भी हमारे पास होते हैं काफ़ी सारे, एंड देन द वेदर इज़ गुड टू वर्क आउट। एंड लोगों का ये मानना है कि समर में यू टेंड टू लूज बिट मोर वेट देन इन अदर सीजन्स। ये भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली होता ये डिटॉक्सिफिकेशन है ये क्या कि आपकी जो भी आपने अंदर दवाएं डालनी, कुछ हम लोग यहाँ के खानों में हार्मोन्स जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बैड हमारी बॉडी में जा चुका है। कोशिश तो आप ये करनी है कि आप जाए नहीं। हाँ। पहले तो हमें एहतियात करनी है, नेचुरल चीज़ें जैसे घर में सब्जियां उगा ली हैं, ये इस तरह से मैंने बहरहाल अपने ऊपर अपना ये सारी स्ट्रेटजीज अपना ली हैं। और अब जब फॉर एग्जांपल जो चीज़ जा चुकी है अंदर, अब उसको किस तरह से क्लीन करना है, तो एक तो पानी पीना ही है, बहुत पीना है। अगर उसमें जो मैं आज बता रही हूँ टिप, उसमें बहुत सिंपल है वो, और क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ इसलिए शेयर कर रही हूँ। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें आप, और एक लेमन ले लें, और 1 कप ग्लास वाटर गर्म पानी में ये डाल के आप आधा घंटा छोड़ते हैं इसे। अच्छा, वैसे बहुत सारी चीज़ें, आप मिंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, शहद तो आप फ्लेवर के लिए एक तरह से ले रहे होते हैं, इसलिए वैसे कैलोरीज उसमें जा रही हैं, लेकिन क्योंकि बात चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे नहीं पी जाती, तो उसको आप थोड़ा इजी टू ड्रिंक हो जाता है। हाँ, वैसे शहद में बहुत फ़ायदे बहुत हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा शहद डाल लें उसमें, और ये आप पानी पिए ही इस तरह से। या चिया सीड आजकल बहुत हैं, मैं खुद ले रही हूँ बहुत ज़्यादा, उससे तो मुझे चिया सीड्स डिटॉक्स वाटर में डालनी चाहिए, आप कह रही हैं? मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि आजकल प्लेन वाटर नहीं पी रही हूँ। अच्छा। या तो चिया सीड का पीती हूँ, या इस तरह का, ये जैसे अभी एक ड्रिंक बन जाएगी, अदरक के 1/2 इंच पीस लिया आपने, और लेमन के स्लाइसेस उसमें डाले, और गर्म पानी में आधा घंटे के। मैंने बहुत से लोगों को जीरा भी डालते हुए देखा है। हाँ, जीरा मैंने लास्ट उसमें बताया था तो कि जीरा उसका क्या फायदा होता है पानी में? जीरा एक्चुअली है क्या कि ये सारी जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं
जो अब ये लोग रिसर्च करके और इस तरह से वो कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो हम सदियों से यूज कर रहे हैं, वो बहुत फायदे। और हम लोग पीछे उनको हमने हटा दिया था अपने किचन में, हमारी ये चीजें अब दोबारा से आई हैं, जैसे अजवाइन है या कलौंजी है, ये इसके इतने बेशुमार फायदे हैं और हम लोग इसको हम नहीं यूज करते थे, लेकिन अब वो रफ्ता रफ्ता मैं आई एम सो हैप्पी कि हम लोग, हमारी यंग जो जनरेशन है वो भी उसके ले रही है, उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर रही है। जैसे फैशन ट्रेंड्स होते हैं वो कई बार फिर से आ जाते हैं ज़िंदगी में, उसी तरह ये जो स्पाइसेस हैं आर मेकिंग देयर वे बैक इनटू आवर किचन्स। और जैसे हमेशा हर बार महमूदा जी कहती हैं कि मैंने ट्राई किया है, ये मैंने ट्राई किया है, तो जो भी टिप्स वो देती हैं आपको पहले, वो शी मेक्स श्योर दैट शी ट्राइज इट एट होम, रिजल्ट्स देख लें, उसके बाद आप लोगों को बोलें। ऐसे नहीं है कि भाई कहीं पर उन्होंने देखा और आपको बता दिया और आपको छोड़ दिया ट्राई करने के लिए, नहीं, शी डज ट्राई एवरी ईच एंड एवरीथिंग। और मेरी जब उनसे ऑफ एयर भी बातें हो रही थी, वो कह रही थी प्लांट्स वगैरह काफ़ी सारे, हाँ, घर में मैंने सारे ऑर्गेनिक मिंट हो गए, ऑर्गेनिक करी पत्ता हो गया, ऑर्गेनिक एलोवेरा। कोशिश करें कि जितनी घर में एक्चुअली ये लोग जो भी चीज़ हम बाहर से ले रहे हैं, तो वो हार्मोन्स हैं और हर केमिकली और इतना प्रिजर्वेटिव और पेस्चराइज और सब कुछ इतना किया हुआ है कि हर चीज़ उसकी ख़त्म हुई हुई है। तो मैंने बहरहाल जो शेयर भी करती हूँ अपनी फैमिली में भी, सबको मैं बताती हूँ कि मैंने घर में सारे पौधे सब्जियाँ सब लगा के कोशिश, और आप छोटे छोटे उसमें पॉट्स में शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ा बैकयार्ड हो और बड़ी जगह हो, आप गमलों में शुरू करें उनको, और आपके लिए हर्ब्स वगैरह तो सब घर में अगर किसी के पास स्पेस की किल्लत है, कोई मसला है, छोटी से अपार्टमेंट में रहते हो शायद, तो मे भी छोटे छोटे पौधे जो हैं, प्लांट्स हैं, अपने पैचियो पर आप लगा दें। और एक्सरसाइज से अपनी ज़िंदगी में मेक इट अ रेजिम कि जब आप मिंट अगर चाहिए या करी पत्ता चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए वहीं से आप जाकर निकालें और उसे अपने इस्तेमाल में लाएं, ना कि मार्केट से ख़रीदें जो चीज़ें जो आपको नहीं पता है किस तरह ट्रीटेड है। इट्स अ very good way to start and try to be absolutely organic in daily life. इसलिए अब जैसे पौधे आगे घर में लगे होते हैं, खूबसूरती भी बढ़ रही है और आपको फ़ायदे भी हो रहे हैं। तो इसी तरह से और चीज़ों में भी हम लोगों को स्लोली और ग्रेजुअली, हम लोगों को मशीनी ज़िंदगी जो है ना, उससे हमें अपने आप को, उससे आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, आपकी डिटॉक्स भी होंगे, आप एवरीथिंग इज़ right in your home actually. And for all you know कि maybe that was उससे आपको कुछ सुकून, जहनी सुकून मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों को कोई चीज़ें जब शुरू करते हैं, जैसे मे बी गार्डनिंग से, किसी गार्डनिंग से मैं इतना एंजॉय करती हूँ, आप यकीन जाने, मैं कभी बाज़ मैं अपनी कज़न से बात कर रही थी कि मैं अपने प्लांट से बातें कर रही होती हूँ क्या भाई क्या हाल है, क्या हुआ, बहुत कलियाँ आ रही हैं। और इस दफ़ा मेरे टेंजरीन ट्री जो है वो माशाल्लाह इतना भर के उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैं इतनी खुश हो के, और मैंने कहा वाह भाई वाह, इस दफ़ा तुम पे भी बड़ा असर इस तरह से करके उनसे बातें भी हो रही होती हैं और फिर आपको सब्र का फल भी मिल रहा है। सब्र का फल भी में तो खट्टा होगा शायद, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त जो वो है ना किस्म है टेंजरीन की। तो आई लव, मतलब घर के फ्रूट्स का जो आप तोड़ के, मिंट में ग्रीन अनियन अपने आज ऑमलेट बना रही हूँ, उसमें ग्रीन अनियन डाल लिया, वो भी घर में से निकाल, है। बहुत इजी है। आप, मैं यही बता रही हूँ, बहुत इजी टू ग्रो है। किसी प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह ये भी थोड़ा बताऊंगी। मैं बहुत, और ये लोगों को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये कोशिश करें, ट्राई दिस एंड वो कामयाब हो उसमें, क्योंकि गार्डनिंग में भी ऐसे हैं कि मे बी इफ़ यू डोंट लाइक शी वाज सेइंग अ ग्रीन थंब ना हो, या फिर हो सकता है कई बार आप पौधे लगाएं और वो मुरझा जाएं। सो इट ऑल डिपेंड्स, इट्स ऑल कभी कभार उसका भी ये कि देखिए, एक्सपीरियंस मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। कि मैं शुरू में मेरे साथ भी थोड़े से इंसिडेंट्स हुए, लेकिन उनसे मैंने लर्न किया, अपने तजर्बात से लर्न किया कि आपको फुल सन देखना है, किस चीज़ में फुल सन जाना है, किस में पार्शियल सन देना है, इस तरह की चीज़ें। आप बस सिर्फ रीडिंग, अगर मेरा 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कुछ ना हो, मेरे पास हो किताब हो और म्यूजिक हो और सफाई करने के लिए नहीं सफाई करने के लिए जगह हो, खाना पकाने के लिए मैं आपको दावत देना चाहूंगी अपने अपार्टमेंट में। आई लव टू क्लीन। मेरी बेटी कहती है, अक्सर हैरान होती है, अम्मी किस तरह से आपको अच्छा फीलिंग होती है। मैंने कहा आई लव टू क्लीन। आप डांटोगे इतना मुझे, तो फिर मुझे शर्मिंदगी होगी जब आप आओगी खाना पर, लंच पर आओगी, और मुझे जो डांट पड़ेगी उससे मुझे लगेगा चले जी अब तो
वक्त निकाल कर जरूर मेरे आने से पहले की तैयारी होगी। अच्छा जी, दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब दूसरी टिप हो गई हमारी कैविटीज। मेरे बचपन में मेरे बच्चों के भी यहाँ हो गए थे, जब तक मुझे इतना नहीं मालूम थी इन चीज़ों का ऑनेस्टली। अब थोड़ा टाइम भी है तो रीडिंग भी ज़्यादा कर लेती हूँ। तो कैविटीज़ के लिए हमारे घर में ही सब चीज़ें मौजूद हैं। फिटकरी आमतौर पे नहीं होती, लेकिन वॉलमार्ट तक में मिल जाती है यहाँ। अच्छा जी, फिटकरी, तो इसका आप इंग्लिश अंग्रेजी नाम भी बता दें लोगों को। एलोम कहती हैं, ALUM, एलोम। तो इसको और कोयले का पाउडर, जो चारकोल पाउडर जो होता है वो, और क्लोव ऑयल, और ये सब मिला के आपको एक पेस्ट सा बनाना है। जैसे टूथपेस्ट बन जैसे जाएगा, बचपन में होता था दंत मंजन। हाँ यूँ कह सकते हैं आप। हाँ। और उनको आपने ब्रश अच्छी तरह से करना है और खूब अच्छी तरह से उसको फिर, अच्छा होगा क्या कि कोयला क्योंकि आपने जब किया तो उसकी एक तो वो काम तो करेगा, लेकिन जब आप उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप रिंस करेंगे तो उसके साथ चीज़ें बाहर आएंगी। जो कोयला जो है ना अपने साथ सारी चीज़ें बाहर भी लेके आ जाएगा। तो इस फिटकरी को भी हमें पाउडर करना है। फिटकरी पाउडर तो ये आसानी से हो जाती है घर में? हाँ, फिटकरी पाउडर वैसे मिल जाता है। मैंने तो फिटकरी पाउडर ही लिया था ऑनेस्टली। मेरे पास उसमें भी था, सॉलिड शेप में भी था, लेकिन मेरे पास पाउडर भी है। और फिटकरी वाहिद ऐसी चीज़ है कि आप रेगुलर उसके गॉगल करें दांतों के लिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दांतों की। मतलब सिंपली फिटकरी, नथिंग एल्स। आप अपना ब्रश किया, उसके बाद एक दफ़ा जैसे लिस्ट्रीन की जगह आप फिटकरी यूज़ कर लें, तो उससे आपके एंटीबायोटिक भी वो है ना, ये एक तरह से अंदर से आपको सारी जो भी प्रॉब्लम है उनको, इवन कैविटी के लिए, जबकि कैविटी यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में। मेरे अपने बच्चों छोटे जब थे तो उनकी प्रॉब्लम होती थी कि हर दफ़ा डेंटल अपॉइंटमेंट में उन्हें पता चलता था 1-2 कैविटीज़ हैं, और वो कोशिश होती फिलिंग करती हैं। अब फिलिंग में भी ये कि फिर क्योंकि मेटल जा रहा है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं उसके। मतलब हम टॉक्सिन अपने अंदर खुद डाल रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, खानों में, इस तरह की चीज़ों में। तो हमें इन चीज़ों से जितना हम ओल्ड स्कूल बन जाते हैं, जितना पुराने ट्रेडिशंस को अपनाते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। हालांकि ये नुस्खे अगर देखे जाएं तो ये बहुत पुराने दौर के हैं। एक आखिरी टिप के लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच गया, आखिरी टिप भी आप बता दें। ये बहुत मैं क्विकली बताऊंगी। टाइल्स का ग्राउट जो होता है ना, स्पेशली किचन वगैरह में है या लिविंग रूम में, तो ग्राउट हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देसी घरों में तो ख़ास तौर पे। तो मेरे अपने घर में भी है, और मैंने लास्ट वीक एक्चुअली ट्राई किया कि फिर आपको बेकिंग सोडा लेना। बेकिंग सोडा इज मस्ट। अभी हम बात कर रहे थे बेकिंग सोडा मुझे लगता है मुझे बल्क में जो है मैं सैम से लाती हूँ बड़ा वो जो है, और माशाल्लाह काफ़ी बेकिंग सोडा एंड विनेगर। हाँ, विनेगर। और उसमें आपने डिश वॉशिंग लिक्विड भी यूज़ करना है। उसको जहाँ भी आपका इफेक्टेड एरिया है उसमें आपने डाल दिया, थोड़ी देर छोड़ दें उसको। अगर आपके पास जितना टाइम है, एटलीस्ट 30 मिनट 15 मिनट छोड़ के, और ब्रश से आपने रगड़ लें, तो उससे आपके बिल्कुल इतने साफ सुथरा वो हो गया। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस हुई, मेरे यहाँ वुड फ्लोर भी है, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि बेकिंग सोडा का, क्योंकि वाइट जो पाउडर है उसने मुझे थोड़ी प्रॉब्लम की। मेरे पास हार्डवुड फ्लोर है, मैंने उसमें यूज़ नहीं किया था, लेकिन क्योंकि टाइल्स में यूज़ हो रहा था तो वो पाउडर की थोड़ा सा जा रहा था वुड फ्लोर पे। तो उसके लिए मुझे सफाई काफ़ी करनी पड़ी। अगर आपके यहाँ वुड फ्लोर है तो आप कोशिश करें कि बेकिंग सोडा जो है वो बहुत कम यूज करें। और अगर इस्तेमाल करना है तो मे बी यू कैन जस्ट लाइन अप कवर कर दें उसे, या तो एक पुरानी चादर हो या फिर न्यूज़पेपर किसी तरह भी आपको वुड फ्लोर। इसलिए मैंने अब थोड़ी सी मिस्टेक, ये इतना करने के बावजूद भी आप में मिस्टेक से ही लर्न करते हैं आप। थोड़ी सी हुई कि पाउडर, उसको फिर मुझे वुड फ्लोर को काफ़ी सफाई करनी पड़ी, लेकिन गुड वन एक्सरसाइज मेरे पास 5-6 घंटे की एक्सरसाइज हो गई लेकिन वो घर चमक गया। उसकी जो वसूलियाबी ये हुई कि बहरहाल ग्राउंड जो है वो क्लीन हो गया। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही आसान, बेकिंग सोडा और उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है आपने, और विनीगर। अच्छा, बाज़ लोगों को विनीगर की खुशबू, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रा इरिटेट करती है, स्ट्रॉन्ग लगती है, तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो बस थोड़ी देर छोड़ना है उसको और ब्रश से रगड़ दें आप।
बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थी 3 बहुत ही अहम टिप्स जो हम अपनी डेली लाइफ्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि डिटॉक्स वाटर के बारे में बताया, किस तरह हम इसे इस्तेमाल करके मे बी वर्क टुवर्ड्स वेट लॉस, उसके बाद ग्राउट कैसे क्लीन किया जाए, एंड किस होम रेमेडी से हम कैविटीज़ जो हैं उसे अवॉइड कर सकते हैं। ये थी महमूदा जी हमारे हाउस होल्ड टिप्स की सेगमेंट में। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। से बात करनी है, कोई क्वेश्चंस हैं उनके लिए, या फिर बस हमारे शो में फ़ोन इन करना है, कॉल इन करना है, यू हैव द नंबर ऑन द स्क्रीन। कई सारे सेगमेंट्स हमारे हो चुके हैं, अब चलते हैं हम एक हेल्थ और फिटनेस का सेगमेंट जो लेकर आती है हमेशा हमारे लिए अलीना, और इस बार उन्होंने कुछ अलग सा किया है, कुछ वीडियोस भी बनाए हैं हमारे साथ जो शेयर करेगी अलीना, और साथ में शी इज़ एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट ये एक्सरसाइजेज जो है वो किस तरह अपनी मसल्स को चैलेंज किया जाए, ये हमें सिखाने वाली है। अलीना, हेलो एंड वेलकम टू द संडे ब्रांच। Hello, thank you for having me back. So, you're going to talk about how to challenge your muscles today. Yeah, so most weeks I talk about the importance of challenging your muscles in ways that aren't just cardio based. So I talk about how you need to make sure that you're stimulating your muscles in order to help them grow, which in turn will actually help in fat loss later on. So we all are very familiar with the different cardio methods. I've talked about them before. So what I wanted to do was show 6 beginner exercises that you can do at home. And if you complete all 6, then you basically hit every muscle in your body at least a little bit. So it's a way to introduce different exercises into your routine, and you don't need any equipment for any of them. So I thought this would be a very good place to start in case you haven't done this before, or you just wanted to understand what I mean when I say doing exercises to challenge your muscles at all. So do you have a time period that every set of exercises should be done for? Yes, so if you have never done this before, I would recommend doing each exercise twice in one workout for 10 repetitions. So that's 2 times all of the exercises for 10 repetitions. And I recommend about 3 times a week because they're not very heavy exercises, they're not very big movements, so you won't get hurt trying to do them more. Like if you want to do them 3 times a week, you won't get hurt doing them. So that's 2 sets of 10 each. ये करना है अगर आपको शुरुआत for beginners you want to do this way. तो चलते हैं पहले हम वीडियो की तरफ अलीना के, जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस देंगी कि कैसे हमें किस तरह से इसे अडैप्ट करना है अपनी लाइफ में to challenge our muscles. जी बिल्कुल. So we have the video playing. अलीना, आप कुछ बताना चाहोगी वीडियो के बारे में? Yeah, so the video itself is only 2 minutes long. I've shown each exercise in very short clips so that you can save it and follow it. The first exercise is a push-up, and I showed a beginner version so that people who can't do the full version know that there are other options from your knees. And you just need to focus on making sure your back is straight and that your arms are what are pushing you back and forth. So you'll feel it in your chest and in like the back of your arm area. And then after that, I showed something called a mountain climber. This is a little bit more challenging. So if you are a beginner, just slow the movement down. But again, it's to help with your arms and to help with your core so that you have to stay up in order to perform the entire exercise. So I'm doing it a little fast in the video, but you can just slow it down until you get more comfortable with it. And the next one is called a back extension. When we sit a lot, we tend to feel pain in our lower back because it's not a very strong part of our body. So I wanted to make sure I included an exercise that actually helped you strengthen your lower back a lot more. And then after that, I have something called an up-down. That's what I call it. It's essentially using your arms to lift and lower your body. And it's, again, going to really help you with your back, with your core, and just like overall your entire strength. Or फिर उसके बाद I have something called a glute bridge, and that is when you're on your back and you push your body up using your heels.
And that's very, very important for strengthening your legs, especially if you do a lot of cardio, you tend to ignore this muscle. So that's another reason I wanted to include this, and I enjoy it. And the sixth exercise is my favorite in, I think, all of these, and it's just a lying leg raise. So you lie on the side of your body, and you lift your leg up and down. And the trick is to point your toes down during the exercise, and you'll feel it a lot more. And this, again, is a leg exercise. So all these 6 sets of exercises for challenging your muscle. Alina, I have a question. मैं देख रही हूँ आपने hard floor पर ये सारी exercises की हैं, लेकिन do you need a yoga mat or do you need some kind of specific floor? और हम बात करेंगे about the kind of clothes and shoes also we need to wear. लेकिन सबसे पहले किस किस्म के floor पर ये exercise की जाए? Okay, so the first thing I'll say is if you have a carpeted floor or a yoga mat, that's much better than what I did. When I was filming it, I didn't really have a mat near me, so I just did what I had to do for filming exercises. But a yoga mat is a much better option, especially for the exercise that the up-down, where you're going down and up, because you can hurt your elbow. So for that reason, a yoga mat is better. And I was wearing full sleeves in the video, so I didn't really hurt my arms that much because the sleeves kind of helped me. But if you have a carpet or much better a yoga mat, then I'd recommend that. As far as clothes, none of these exercises are going to require specific types of workout clothes. Just anything you're comfortable in and anything you can really move in is probably your best option. Uske alawa, I recommend wearing shoes for these particular 6. One of them requires more running, and the shoes help you grip the floor. So that way you can actually make sure you're not falling over or like tripping over yourself. So any type of sneakers with a rubber sole will be perfectly fine. I've seen a lot of time when I go to the gym, तो especially मेरे ख्याल से योगा के दौरान जो है लोग they prefer to not wear shoes and सिर्फ socks में या फिर just bare feet वो चाहते हैं वो कोशिश you know that's how most people like to exercise during yoga. But obviously इसमें क्योंकि running involved है आपकी grip ज़रूरी है floor पर तो in exercises में and most of the exercises make sure you wear the right kind of footwear. Also, you know, अगर आप कुछ tips देना चाहेंगी when people go to choose the kind of footwear or activewear clothes, if you'd like to give out some handy tips to people when they go shopping for those. Yes. So as far as sneakers are concerned, my biggest tip is going to a store and first figuring out if you actually have a flat foot or a foot with an arch. So there are people like me, for example, who have a flat foot. Just ka matlab hai ki we don't have an arch in the middle. And that can cause a lot of pain when you're running or just doing any type of exercise if you don't have a shoe that has an arch in it. So I recommend first figuring that out. There are running shoes made with no arch and there are running shoes made with an arch. So first figuring out what type of foot you have is the best option. And I can talk about that more in another segment, how to figure that out. But that's number one. So because when I run, I will feel pain in I think it's my shin and my ankle. I will make sure that my shoes have that arch so that my foot is completely supported. That's number one. As far as number two goes, I think everyone has their own favorite brand of footwear, of sneakers. My favorites I can share in case anyone's interested in like looking up new ones are a brand called ASICS. That's my favorite as well. Yeah, I adore them because they have a lot of options for people with my problem. So because I have a flat foot, it has a lot of options. So AESIC in case you need the spelling. And I actually also really love some of the Nike shoes for running. They have a Nike Free option, which has a lot of models in it. So I think that also is really good for people who don't have as flat a foot as I do. So it depends on where you are. But in terms of safety, if you are running at all, I recommend getting a shoe made for running because that's the place that you'll most likely get injured. So preventing that injury is most important. Yeah, and also going back to those muscle challenging exercises, would you like to add something else? कुछ और आप add करना चाहोगी उन exercises के बारे में कब किया जाए, कैसे किया जाए, and sets आपने बता दिए 2 sets each of 10 or 15. Yes, definitely. So
what I recommend strongly is writing everything down. And this is very important if you want to make progress. So for the first week, every time you do the exercises, I would write down how many times you did the entire cycle of exercises, the entire circuit, and how many times you did each exercise. So if you follow my recommendation, then you would write that I did each exercise 2 times through and I did each 10 times. और फिर अगले हफ्ते जब आप दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो फिर you can see, okay, I did 2 times by 10. Let me see if I can do more. Let me see if I can do some exercises 3 by 10. Or can I do 2 by 12? And that way you actually make sure you're steadily doing more. Because if you only do the first recommendation I gave, which is 2 by 10, you actually won't see as much progress unless you keep increasing the intensity or increasing the exercises. And as you get stronger, as you get more comfortable, it'll actually be pretty easy to keep increasing it. That's my biggest tip is to make sure you're actually challenging yourself and tracking that you're actually doing more each week. यस बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई नई एक्सरसाइज या regime शुरू करें, you always must start with baby steps and then build up your stamina and then go towards more intense workout. Would you like to add something on that, Alina? On the intensity aspect of it? Yes, intensity. So there's another trick that I like to use to make it more intense. So if you can do all of this and it's not very challenging for you, one way to increase the intensity is to just go through them faster. So take very little breaks in between the exercises, which will keep your heart rate up. If you're a beginner, don't worry about that yet. Just focus on getting through the exercises. But if you are getting much better at these, then I'd recommend shortening your rest time, and that'll actually increase the intensity of the entire session for you, which will increase the benefit after. When you said this, the rest time, so ideally, beginner's point of view, या फिर future में obviously we can speak in two other, दो अलग segment की तरफ हम बात कर सकते हैं, दो अलग questions की तरह. But शुरुआत में कितना break time लेना चाहिए और जब आप intense करने की कोशिश कर रहे हो तो ideally, is it like 30 seconds या 1 minute, कितना break time होना चाहिए? So if you're a complete beginner, I'd recommend 30 to 60 seconds in between the exercises and then 2 minutes after you've completed all 6 before you start again. Okay. So that's 30 to 60 seconds in between each exercise and then 2 minutes at the end of the 6th one before you start over. And if you want a more challenging workout, then I'd reduce that to probably 10 to 20 seconds in between the exercises and then only 1 minute after the 6th exercise. So those are your options. And you can play with the numbers based on your level, of course, but if you were trying to find a more beginner-friendly or a more challenging type of experience, those are my 2 baseline recommendations. So Alina, you did mention these exercises और बात आपने की है कि किस तरह मसल को चैलेंज किया जाए, लेकिन एक सवाल मेरे पास और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के पास ये है कि ये सारी चीज़ें तो खैर you can incorporate and you can work towards it, लेकिन सबसे पहला सवाल, अहम सवाल ये होता है, how does one motivate, self motivation कैसे करे इंसान so that you try and you शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी है, तो किस तरह self motivation, any tips for that? How does one self motivate oneself? To be honest, I'm not motivated to do any type of exercise every day, and I believe personally that discipline is a much more important idea than motivation. So there are some days I'm very motivated, I'm very excited to go to the gym, and then there are other days I don't want to go at all because I'm tired or I've gone to class all day or the dil nahi cha raha. So if that's the case, because I've disciplined myself into going, it's a lot easier. So don't look at it from the mindset of how do I get myself excited to work out. Look at it from, this is my 7-day week. I have dedicated Monday, Wednesday, and Saturday to doing these workouts. I have dedicated this 30-minute time to doing workouts, and that's just what I'm going to stick to. So if you discipline yourself to schedule it, that's much more effective than the motivation aspect, because honestly the motivation comes when you realize how it makes you feel better, which can be after maybe a week of working out or maybe 2 weeks. It depends on the person.
So because I've been doing this for like several years, I know that I will feel significantly better after. So I can use that to motivate myself. But if you're a beginner, number one is just discipline, because the discipline will give you the consistency. So just dedicating that time and just not being compromising on it and just saying, "ठीक है, ये होगा, I'm going to do it, that's it," is much more effective than hoping that today I'll wake up and I'll feel like working out. I was I was really hoping कि आप ये बोलें कि पिछले दिन आपने निहारी खा ली, बिरयानी खा ली, चीज़ केक खा लिया, तो फिर फ्राइज़ खा लिया, तो अगले दिन आप you're motivated. Oh my God, I actually cheated और I must go work out. तो ये इस तरह का motivation मैं सोच रही थी, आप बताएं हमें. हाँ, but like कोई भी काम हो, just like going to work, I refuse to believe that everyone wakes up very excited to go to work. I know that that's not the case, but they go anyway because they've adopted the discipline, they've adopted the schedule, understand that it's necessary. So if you take that mindset that everyone can have and just also use it for fitness, because fitness is considered very optional to many people, which I think is dangerous because it involves your health, it involves your well-being. Also, just like your mood, it affects so many things that if you look at it from more of a, I have to do this, not from a, I'll do it if I feel like it, then it's going to help you a lot more. Because comments काफी आ चुके हैं मेरे पास कि I just don't feel like going to the gym, and my response is always, it doesn't matter if you feel like going, it matters if you go. So, and once you get there, once you start, it all usually makes sense and you feel a lot better. So you just need to get through the first step of actually doing it. Alina, you can also share quickly आपकी जो website है जहाँ पर लोग आपको follow कर सकते हैं, जहाँ पर सवालात आपने भेज सकते हैं. So the easiest ways to follow me or to find more videos that I do is on Instagram or Facebook. Both of them are just Fitness 360 with Alina, so it's very easy to find. And then on my website, I have more information on training that I provide for people online, so you can be anywhere and I'll train you. And that's fitness360withalina.com. So any of those options work, so whatever is easiest for you. Thank you so much for speaking with us, Alina. बहुत ही ज़्यादा info काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी and how to challenge the muscles और किस तरह इंसान अपने आप को self motivate करें to exercise at home. Thank you for all that information. And in fact Alina इतनी young, energetic और fit है, उन्हें देखकर ही हम motivate हो जाते हैं कि yes, we need to go to the gym. All right, thank you so much. अब हम चलते हैं एक break की तरफ. Break के उस पार I've got Dr. Shamal with us, and I've also got Amardeep Kaur. Thank you. ट्रैवल वाला हो चुका है, साथ साथ में हाउस होल्ड टिप्स एंड ऑल्सो हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स. अब बारी आई हैं डॉक्टर शमाल भट्ट की, जो हमें हमेशा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी न किसी तरह की कैंसर के बारे में. इस वीक उन्होंने चूज़ की हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करना. वेलकम टू द संडे ब्रंच डॉक्टर शमाल. गुड मॉर्निंग हुमा. गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एक्चुअली. गुड आफ्टरनून. जी, so आज हमने चूज़ किया है to speak about ovarian cancer. तो पहले आप कुछ बातें बता दें about how does it happen or what is ovarian cancer? So ovarian cancer, statistically speaking, it's fifth most common cancer-related death in women in United States. And this year about over 22,000 new cases of ovarian cancers will be diagnosed, and about over 14,000 of those patients are expected to die because of ovarian cancer. About 1 in 80 women is expected to develop ovarian cancer in lifetime. So it's not the most common cancer, but it's the most common cancer-related death related to female reproductive organs. So when we're talking about this, you said that it's not most common, like in Pirbi, it's the fifth most killer causes of fatal cancers. So firstly, if we speak about how does it develop, and is there an age group it targets? Generally develops in patients above 60 years of age, but
It can happen anywhere from 40 to above, but on an average age of developing ovarian cancer is about 63. And there are some factors that are associated with development of ovarian cancers, like increased estrogen exposures, female hormone exposures during lifetime, and that can happen with early menarche, when women develop the menstrual cycles at a relatively younger age, late menopause, less number or no children in lifetime, because pregnancy is kind of like protective factor. There's a less estrogen during pregnancy, so it's kind of like protective factor. If there is a family history of ovarian cancer, the other family members are at higher risk of developing ovarian cancer. And there are some other genetic mutations. We always talk about genetics. So there are genetic mutations are associated with ovarian cancer development. When we talked about breast cancer, I spoke about a mutation called BRCA mutation, BRCA1 and BRCA2 mutation, and that also significantly increases the risk of ovarian cancer development, particularly at a young age. So BRCA mutation, and there's another syndrome called Lynch syndrome, where family members can develop other types of cancers as well, like colon cancer, other GI-related cancer like stomach, pancreas, kidney cancer, urogenital cancers. So family history, increased exposure to estrogens are kind of like some of the factors that are associated with ovarian cancer development. So what are the early signs and symptoms of ovarian cancer? Many times it's asymptomatic, meaning it doesn't cause any symptoms, but symptoms can be non-specific if those do develop. For example, bloating sensation, abdominal distension, pelvic pain, abdominal pain, lower back pain. Those are some of the common symptoms, nausea, vomiting. And these symptoms are non-specific. So if someone is developing those kind of symptoms, it's appropriate to get it checked and figure out what's the cause. If hopefully it's not caused by ovarian cancer. Are there any stages in this kind of cancer? Yeah, just like in any other cancer, there are stages, stage 1 through 4. Understanding staging is a little bit difficult, but higher the stage, it's more advanced the cancer is. The ovarian cancer also has certain subtypes. Some of those cancers are called borderline, which means they're not benign. They're not completely benign, but they can be precursor to high-grade cancers as well. So if there is a tumor in the ovary, it could be benign, it could be cancerous, and there's a category in between as well. So it depends on the final. Once the ovary is removed, once the surgery is done, then we can tell what cancer we are dealing with, and if it's a low-grade cancer or it is aggressive cancer. How does one get this diagnosed? What are the diagnosis process? The initial test could be as simple as pelvic ultrasound, and there is a cancer marker pertaining to ovarian cancer called CA125 that can be checked in the blood. It's a simple blood test. So those are the initial screening tests that can be employed, and if there is a suspicious mass or tumor arising from ovary or some other abnormal findings on the ultrasound, then CT scan or MRI can be done to have a better look inside the abdomen and pelvis. So that's how we find there's a mass, and then if there is a high suspicion, ovary can be removed or definitive surgery can be done to further stage the cancer. Staging of the ovarian cancer is surgically, meaning once we diagnose there is ovarian cancer, surgery is done, all the obvious cancer is taken out surgically, and then extent of cancer is diagnosed and treated accordingly. We also have a caller online. Ji caller, आप on air हो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक डॉक्टर क्वेश्चन करना है। एक्चुअली मेरा कॉलम में सर्जरी हुई थी, मेरा कॉलम रिमूव हुआ था 2007 में।
जी आपका कोलन रिमूव हुआ था? जी 2007 में I have a tragic colitis that as a surgeon decided to remove the colon before cancer or anything. So I don't have a symptoms of cancer when he removed my whole colon. That is not the edge of something outside. So I have a question. मुझे किसी कोई चांसेस है कि कोलन कैंसर या किसी टाइप का कैंसर हो सकता है? So मुझे I'm sorry आवाज़ आपकी इतनी क्लियर नहीं आ रही। मुझे थोड़ी चीज़ जो समझ आई है वो ये कि आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हुआ था और कोलन रिमूव किया गया था। कोलन रिमूव किया गया। After 10 years, जो पॉलिश एंड द डॉक्टर recommended me to remove the colon. So surgeon ने चेक किया था, so he said you don't have any symptoms, the cancer symptoms, but I want to remove your colon before that. So they removed my whole colon. And the diagnosis was. And the diagnosis was ulcerative colitis. Yeah. Okay. And after 10 years, they suggest me that before cancer symptoms, कोई आप colon remove कर देते हैं. Okay. So now I believe she wants to know कि अभी भी ये risk पर है colon cancer के या नहीं. So thank you it's a so good, much thank you. It's a good question. Patients who have ulcerative colitis are at a higher risk of developing colon cancer, and it also the reason for surgery may not be only the reason that it could lead to colon cancer, but if the inflammation caused by ulcerative colitis is severe, many times colon is removed, and yes, the risk of colon cancer goes up if someone has ulcerative colitis or inflammatory bowel disease. I don't know if the whole colon was removed or the part of the colon was removed. So if there is any colon left behind, yes, colon cancer can still develop from that small part of the colon if it's left behind. Because sometimes it's hard to remove the whole colon, and sometimes it's patient's preference as well. Okay. So if there's any colon left behind, that needs to be screened off and on to make sure it's not developing into colon cancer. ये तो था उनके सवाल का जवाब. Back to ovarian cancer. What are the types of treatments available अगर किसी को they are detected or they're suffering from that? So just briefly and making it concise, initial treatment is surgery. Surgically, all the abnormal looking organs in the pelvis are removed, uterus is removed, ovaries are removed, any coverings around the ovaries and around the uterus are removed, and then surgically, after the specimen is taken out, then we better tell the exact stage of the ovarian cancer. And after that, generally speaking, chemotherapy is needed, and most patients tolerate chemotherapy very well. It's usually about 6 cycles, and after that, once if it's not too extensive, meaning the cancer has not spread to lungs or really distant parts of the body, then usually it's the 6 cycles of the treatment. It's only a good surgical oncologist, gynecological surgical oncologist can tell if the surgery is possible or not. In majority of the cases, yes, it is possible. All the abnormal looking tissues removed, and it's a standard of care that majority of the cancer which is visible is taken out, hoping that it's called debulking surgery, and we hope that once the surgery is done, all the abnormal tissue is taken out, and it is, we would call it, if it's less than a centimeter size residual cancer left behind, then or no cancer visible, then we call it appropriately debulk surgery, and after that chemotherapy is given. And often, and many times, it can come back if the stage was advanced, like advanced stage 3. A lot of time it comes back, and based on the findings at that time, radiologically, then we decide for the treatment. I know we already spoke about genetic mutations and stuff like that, but how about risk in families? How does, वो कैसे important role play करता है in this type of cancer? So if there is a strong family history of cancers, genetic testing may be valid for that particular patient.
as I mentioned earlier, there is a mutation, BRCA1 and 2 mutation, that runs in family and can lead to ovarian and breast cancer syndrome. So multiple family members with history of breast cancer or ovarian cancer should be, should be assessed for that particular mutation. In general, genetic testing is done for all the patients diagnosed with ovarian cancer. And then the Lynch syndrome I mentioned, if there is a family history of cancers related to GI system, for example, stomach cancer, small intestine cancer, or pancreatic cancer history, the cancer related to urogenital system, though that kind of history and also colon cancer. If that kind of history runs in the family, that needs to be assessed as well. And actually, when we were talking about the treatment as well, there is a group of drugs called PARP inhibitors we have available now for last several years that we can use in those patients who have BRCA mutation and have been diagnosed with ovarian cancer. So after initial treatment with chemotherapy, if the cancer comes back, patients may be eligible for those drugs as well, targeted therapies as well. So, it a lot depends on the family history as well. All right, so thank you for all that information. That was Dr. Shamal Bhatt, जो हमेशा हर week अपने segment में किसी न किसी एक topic पर किसी एक kind of cancer के बारे में हमें बहुत मज़ीद information देते हैं. ये important information है जो ordinary लोगों को जानना चाहिए और we should keep this information handy, and he makes it a point to educate us regarding all the different types of cancer. चलते हम छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक के उस पार एक और आखिरी गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगी, अमरदीप कौर राणा. Welcome back, Nazreen, to the last segment of the Sunday Brunch. मेरे साथ मौजूद है एक ह्यूस्टन की बहुत ही मशहूर मॉडल होने के साथ साथ ऊपर वालों ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी दी है. चलें वक्त ज़ाया किए बिना मिलते हैं अमरदीप कौर राणा से. हेलो एंड वेलकम. सत श्री अकाल जी. संडे ब्रंच. सत श्री अकाल हुमा, कैसी हो? वैसे इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी मुझे सत श्री अकाल एंड मुझे पता था कि मे बी तो ये बता दूं लोगों को दैट अमरदीप एंड आई नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड वैसे सत श्री अकाल का मतलब क्या होता है? सत श्री अकाल, इट्स एक्चुअली, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. सत का मतलब होता है ट्रूथ. ओके. श्री जो होता है हमारे में यूज़ किया जाता है विच इज़ मोर लाइक अ रिस्पेक्टफुल वर्ड, रिस्पेक्टफुल टर्म. एंड देन अकाल इज़ बेसिकली गॉड. So, इसका पूरा मतलब क्या हुआ हुमा? वही हो गया. Okay. Okay. सत यानी truth, फिर श्री यानी श्री और फिर काल यानी God. So it means that दरअसल बात यही है कि जिस भी लैंग्वेज में चाहे आप सलाम करके लोगों पर बरकत भेजें या फिर सत श्री अकाल कहें, वैसे आइडिया बिहाइंड दिस इस कि आप लोगों की सलामती चाहते हैं, उन्हें जब भी आप इंट्रोड्यूस करें, उनसे जब भी बात करें, and I think हर लैंग्वेज में I think we give the preference to God first. So it means basically the truth is God. तो वैसे मेरी पंजाबी की तो ट्रेनिंग होती रहती है अमरदीप के साथ, और साथ साथ में मेकअप की भी काफ़ी ट्रेनिंग करती रहती है. वैसे हमेशा जो मेरी लुक और हेयर के पीछे एवरी वीक दैट शी इज़ द लेडी बिहाइंड इट, एंड आई कांट थैंक यू मच टू पुट दिस लुक टुगेदर एवरी वीक. सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द मॉडलिंग पार्ट ऑफ योर करियर. कितने साल हो गए आपको मॉडलिंग में और कैसे शुरुआत हुई मॉडलिंग की? मॉडलिंग की honestly I never really thought that I was going to be a model. It was one of those things that छोटे होने से बचपन से देखती हैं लड़कियां कि रैंप पे वॉक कर रहे हैं, but it was like one of those times कि हाँ what मैं भी करूँगी किसी दिन, ऐसे मजाक में मैंने बोल दिया. लेकिन honestly मुझे नहीं पता था कि God has all these plans for me where मैं singing में जाऊँगी, I mean in modeling या singing या any of that.
जब मेरी शुरुआत हुई थी, I was very little, शौक था रैंप का, थोड़ी बहुत ही वॉक करती थी and all that. आप अभी भी लिटिल ही हो. अभी भी लिटिल ही हूँ. But the thing is कि now I took it, 2 साल हुए हैं मुझे actually, I took it into a professional way, and I've joined Jazz Creations obviously, and I've learned more and more from there. But अभी 2 साल हुए जो मैंने इसको पूरी तरह professionally accept किया है as a walking and modeling. So you do walk the ramp, you also do some kind of stills and commercials as well. तो I'm pretty sure बहुत सी लड़कियां हैं जो aspire करती हैं modeling में career करने के लिए या maybe acting में career के लिए. So being शुरुआत कहाँ से की जाए, कोई tips अगर आप देना चाह रही हो लोगों को that want to get into this career? If they want to get into modeling, tips I would say कि there is really no tips. क्योंकि as you start modeling, you learn and you get that experience. जो experience मेरा है ज़रूरी नहीं है कि औरों का भी वही experience हो. So it's a very different कि you खाना अगर आपको पता है कि आप modeling में जाना चाहते हैं, obviously the first thing everybody says कि you have to be like on your diet, make sure you carry yourself well, need to know how to walk in those heels. It's really not that easy. It has a lot of work behind it. So if you really want to do modeling, you would go study what you're looking for. It's just like you're doing anything. अगर आप doctor कर रहे हो तो आप any kind of you're doing, it has to be something related to medical. So अगर आप modeling का वो कर रहे हो, then watch those shows, ramp walks and stuff, because that's how I used to watch. I watch all those Victoria's Secret models. I never really wanted to be one of those thin models. I was always like, what? Punjabi Kudi. And I am proud of it, okay? So when Punjabi Kudi is on the ramp, like everybody knows Punjabi is on the ramp. So we all know that she's the real Punjabi Kudi of Houston. लेकिन modeling के साथ साथ एक अलग इनका जो है the other side of Deepu, जो side जो उनके जो लोग हैं, the people that are close to her, we always recommend her, suggest her कि यही चीज़ उन्हें follow करनी चाहिए, because that's the real true Amardeep Kaur Rana, and we are talking about the singing side of it. तो ये कब से develop हुआ, ये मुझे भी नहीं पता था, हाल ही में recently I got to know, ये कब से develop हुआ और अब कहाँ तक काम पहुँचा है? Okay, so with the singing, like I said, as I'm going right now, I'm discovering all these things that are in me. I never took it seriously. I've always had since I was a kid, we used to having Takshini in our school, and my teacher used to always tell me, like, you have such a good, God-blessed voice, why don't you use it? And, become something, go into Saregamapa and all that stuff. When I came here, my dad, he's a priest. So I started doing kirtan in the Gurdwara. So I would have people tell me, do kirtan more often. Do more often because you have that voice. And I never really, honestly, never took them seriously. I used to do kirtan, but it was one of those things where a kid just want to do and then it's just like, oh, I have to get this over with, And I would enjoy doing it, but at the same time, I was just like, okay, let me try something new. Then I wanted to go into Saregamapa, but my parents were not, my dad didn't want me going in there. So you just said that you don't know what you can do, अचानक आपको पता चल जाता है, can you say बिपड़ी पापड़ी बू? हो सकता है कुछ magic हो जाए अचानक? इतना ज़्यादा बिपड़ी पापड़ी बू नहीं होता, it takes time. You kind of like discover yourself. I think everybody in this world has a purpose, you know what you're doing. As you go, you will be on the right path. तो दीपू को शो पर बुलाया है और गाना नहीं अब तक हुआ है, तो that's I can't put this two things together. So कोई गाना तो सुनाए हमें. Okay, I'll start with one song that ये जो गाना है, it's very close to me because my mom, she used to do kirtan as I was little, and I used to, मेरी मम्मी की आदत, वो kirtan शुरू करते थे और मैं गाना शुरू कर देती थी. So this was one of those क्या कहते हैं, music कह लो या एक you just kind of start humming. And तुम्हें वो पसंद आ जाता है. So anyways, then I found out that this was one of those songs. It's an old song. I'll sing a little bit. तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर, क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के, क्यों ये नाचने लगी, चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों
मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। That was beautiful. Unplugged, इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी आवाज़, वैसे ब्यूटीफुल वॉइस, यस, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही है, ब्यूटीफुल वॉइस। ऐसे नहीं काम चलेगा, पंजाबी गाना भी थोड़ा बहुत हमें चाहिए, मे बी थोड़ा सा जो समथिंग दैट्स क्लोज टू पंजाबी, why don't you suggest me a song? पंजाबी आती नहीं है मैं तेनू समझावा कि I was hearing that you were humming that. Okay, I'll try singing that. मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। Absolutely beautiful. मुझे I really can't control myself क्योंकि जो लोग मेरी आदत से वाकिफ़ है, I am so into chorus singing या फिर जो गाने भी मैं प्ले करती हूँ अक्सर उनके साथ गाती रहती हूँ, but obviously I didn't want to do this, but that was beautiful. So how seriously are you working on this singing career? Well, like I said, I am just discovering that. So now I am actually taking it to next level. So I am trying to come up with my own CD soon. I've been working on it, but the thing is, it takes little time, but I'll get there. I'll get there. तो जब अगर हम अमरदीप कौर राणा को एज अ सिंगर देखेंगे तो व्हाट इज़ दैट वन काइंड ऑफ म्यूजिक जो जिससे लोग रिलेट करेंगे, मे बी बिकॉज यू sang an old song, आपने अच्छा रोमांटिक वाला गाना भी, तो किस किस्म की म्यूज़िक से, जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एन एल्बम और यू डू अ कवर, तो किस किस्म की म्यूज़िक से आप अपने आप को रिलेट करती हो? I'm a very holly jolly person, and it's more like I just love everything about life. I just love it. So if you really see any of the song that is more like romantic or a party song, that you can relate with me. A party song or a romantic song? A romantic song. Okay. Dil Diya Galla. I knew this was coming. Yeah, no, because when you asked me, pehle jab pucha tha, I know we spoke about it. We did when she was doing my makeup and when she was dressing me up. हम जो गुनगुना रहे थे, वो गुनगुना रही थी, मैं नहीं. So, वैसे आपने सीखा है? Were you trained classically or? Before I was not. I was not trained. I know how to play harmonium. So I just had like Saregamapa. That was like what I've learned. और उसके बाद I have trained my voice because I love like कुछ भी मेरे दिमाग में stuck हो जाता है ना, I have to like sing it out. तो मैं उसको इतनी दफ़ा sing करती थी कि वो like मेरी आवाज़ उस तरह से हो जाती थी. And in a way now अभी मैंने recently सीखा है, but I'm still in the process. I am learning. I mean it changes you a lot. So that's definitely God gifted. बिना सीखे इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आवाज़ है अमरदीप कौर की. और एक आखिरी गाना दिल दिया गला, just before we end the show, 2 लाइनें. Okay. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ये नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे माहिया सुन ला मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला. मेरे अलावा किसी और को डेडिकेट करना चाहोगी आप ये गाना? नहीं, this is all for my listeners. Okay, so that was all from the Sunday Brunch Houston से जो आता है हर वीक आप लोगों के लिए. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीक. The Sunday Brunch के साथ कई सारे segments होते हैं हमारे पास, कई अलग अलग मुख्तलिफ guests होते हैं from different walks of life. Thank you so much for tuning in. अगले Sunday मुलाकात होगी इंशाल्लाह. Until then, take care, goodbye, Allah Hafiz.